Hi friends, this is the last experiment that is PH1502L laboratory experiment by Dr. M.R. Gadhvi. Today's experiment is decay constant. The full name is decay constant of capacitor. In this experiment, our aim is to study decay of potential across a capacitor when allowed to discharge through a resistor and to calculate decay constant, which is known by lambda, and the time constant, which is known by tau. The needy apparatus is 12 volt or 5 volt power supply. It's do depend on actually the capacitor capacity, then capacitor, resistance, and VTVM and DVM. VTVM, that is vacuum tube voltmeter. I repeat, vacuum tube voltmeter. And DVM is a digital voltmeter, stopwatch, three-way key, etc. The vacuum tube voltmeter and the digital voltmeter are the meters which having a input impedance is very high. The ideal condition of a voltmeter is that, as you had studied in your 11th and 12th grade, the input resistance or input impedance of a voltmeter to be infinite and the current meter input resistance or input impedance must be 0, and therefore we prefer those voltmeters whose input impedance are very high. Okay, now as we are considering here a circuit, and in circuit we will be measuring the potential across the capacitor. The stored capacitor value, that is V, is going to be measured for a charge capacitor is equal to V0 1 minus e to the power t upon RC, and 1 over RC, that is lambda, so it is also replaced by 1 minus e to the power lambda t. Okay, it should be minus t by RC because it is decaying. Anyway, so with this understanding, the voltage stored within a capacitor is satisfying the equation 1. You can also develop this equation. I think it is a RC circuit you will be studying shortly, or maybe you can look at through any material. Anyway, so V is a residual voltage of a capacitor which is already stored in the capacitor after discharging. So if t is a certain time, then it would be after discharging, and if t is equal to tends to 0, then it would be a fully charged capacitor, and at a t is equal to 0, the charge capacitance value will be V0 because e to the power 0, so it's you can replace it as a V is equal to V0. Okay, so the factor RC define the time constant tau, and the lambda is a decay constant, as I had already discussed in the beginning. So lambda is a decay constant and tau is the time constant. What is the time constant? It is defined as the time in which potential difference of a capacitor become equal to 1 by E time then that of maximum voltage of a capacitor, that is a V0. V0 is the capacitor stored value when the time is not started to get discharged, that is t is equal to 0 second. When you switch on the capacitor to discharge it, the slowly capacitor discharging through a resistor what you have connected in the circuit, and therefore it will be decaying with a certain rate. तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर जब 1 बाई ई टाइम का हो जाएगा, उस वक्त के लिए जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम कांस्टेंट फॉर द कैपेसिटर. सो आई रिपीट, it is defined as the time in which potential difference of a capacitor, that is Vc, become equal to 1 by E time of the fully charged capacitor or the maximum voltage of a capacitor. Right.
And the lambda, that you can understand that as it is named so, decay constant, the rate at which capacitor is decay, that is known as a decay constant. This is a circuit to be used in the connections. So there is a one battery which is parallelly connected to a capacitor. We will be picking up a capacitance value is 1000 माइक्रोफेरेडे, 1000 माइक्रोफेरेडे की वैल्यू है, ये यू नहीं है, माइक्रो है, ठीक है. और it is connected with a one resistor, that is a 1 kilo ohm resistors, 100 kilo ohm resistance. तो किलो का 3 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 0, तो in all it will become a 1 lakh ohm. Okay, the parallel to the resistor we are measuring, resistor and capacitor both are parallel. So looking to the circuit, it seems ki voltmeter is connecting parallel to the resistor, so ultimately it's also parallel to the capacitor. So we are interested to measure the stored value of a capacitor. So यहाँ पे कनेक्ट करो या यहाँ पे कनेक्ट करो, बात एक ही है, ठीक है. ओके, प्रोसीजर क्या है? कनेक्ट द सर्किट. यहाँ पे जैसे दिखाई वो सर्किट कनेक्ट करेंगे. कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली भी मैं बताऊंगा. प्रेस की, 3 वे की है वो, उसको प्रेस करना है 10 सेकंड के लिए. सो द प्रेसिंग की पोजीशन इज नथिंग बट अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, एंड व्हेन यू रिलीज द की it will be discharging process. Simultaneously switch on stopwatch and note down the at least 25 reading with an interval of 10 second. तो क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे 3 वे की प्रेस करो, वो एट द सेम टाइम आपको स्टॉपवॉच चालू कर देना है. सॉरी, आई रिकरेक्ट. जैसे ही ये स्टॉप करो, you should be get alert. As in when you are releasing this key, you have to start the stopwatch, and then with every interval of a 10 second note down the value of VTVM. बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट. सर्किट कट करने के बाद ये 3 वे की को प्रेस करना है. जैसे कि 3 वे की को रिलीज़ करो, you have to start the stopwatch and noting down the VTVM और DVM. हम DVM कनेक्ट करेंगे, डिजिटल वोल्ट मीटर. तो DVM की रीडिंग हम एवरी 10 सेकेंड के इंटरवल के बाद नोट करेंगे, ठीक है. सो वी विल बी नोटिंग आउट द रीडिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर बाय एवरी इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड. तो जैसे कि छोड़ा तो वो 0 सेकेंड और कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग वेरी फास्ट, सो वी विल बी अनएबल टू नोट डाउन द 0th सेकेंड रीडिंग. सो our first reading will be at the 10th second, फिर 20th second, फिर 30th second and so on. और बस बात ख़त्म. 20-25 रीडिंग नोट कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ. और फिर V वर्सेस T माने वोल्टेज और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है. एक दूसरा भी ग्राफ आएगा, ln ऑफ V वर्सेस T, और दोनों ग्राफ से आप एक एक पैरामीटर्स फाइंड आउट करोगे, टाउ एंड लैम्बडा. ओके, सो नाउ दिस इज़ the setup of your circuit. ये सर्किट बोर्ड है और ये पावर सप्लाई है और ये आपका डिजिटल वोल्ट मीटर है. 2 पार्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है. ये वीडियो है, सो हम देखेंगे एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कनेक्ट इट. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड इट. Okay friends, so this is the practical regarding the decay constant, where you need one power supplier. We will be selecting a power supplier of a 5 volt. This is a circuitry board. Here it is written power supply. This is a capacitor through which the capacitor is going to decay, either with this resistor or this resistor. So you having a 2 option to select, either like this or you can connect this resistance, and therefore the stored charge of this capacitor will be decay via either this resistor or the upper resistors, both having a different value. The logic is so simple. If the resistance value is larger, the decay time will be longer. So it is quite understandable that suppose you have a traffic road and you have a less traffic road. Less traffic, that means less resistance road.
more traffic, that means high resistance road. So naturally, the more traffic road will take a longer time to reach from a point A to point B. So if the resistance value is large, the decay time of the capacitance will be larger, and in the smaller resistance it would be less. The voltage across this particular resistor will be noted by this one. So we will be connecting this digital voltmeter parallel to the resistor. The battery will be connected at the place of the battery supply, and this is a 3 terminal are used for a key. So when you press a key, it will charge the capacitor, and when you release the key, it will allow to discharge the capacitor via So I think you had learned what it is here, and now you just understand how to connect the three-way circuit. By mistake, someone has connected, someone has placed the rheostat, but it is not part of our circuit. the pressing button should be on left. So this is a lower terminal. The second line is here, so it's a middle terminal, and this is the upper terminal. I repeat, if you pressing button, keep it on your left. So this is a lower line, so it's a lower terminal. The bigger strip, it is the middle one, and this is the upper. No need to remember because it is mentioned L, M and U. That is L for lower, M for middle and U for upper. And same way here on the board they have mentioned L, M and U. So L will be connected with the L, M will be connected with the M, and U will be connected with the U. Here we will be connecting a digital panel or the digital voltmeter. I'm sorry, there is some graphical issue is there, and but I hope you guys will manage it, and at least audibility will be there, so you can understand it. Okay, so if you look at here, I have also, for ease of you, I have connected one picture which will give us a very clear understanding. Positive terminal जा रहा है यहाँ positive पे, नेगेटिव ऑफ द पावर सप्लाई जा रहा है नेगेटिव पे. थ्री वे की जो हम बात कर रहे थे, तो ये जो ब्लैक बटन प्रेसिंग बटन है तो वो लोअर टर्मिनल पे जाएगा. काफ़ी इजी है क्योंकि यहाँ पे L, M और U लिखा हुआ है, and here also there is a L, M and U is written, so you have to connect accordingly. So it's not at all issue to how to connect it. DVM लिखा है तो वहाँ पे digital meter we will be connecting it, correct? Still now you have a chance to look at how exactly we will be working with. So यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एक कनेक्शन प्लंज देना है. कनेक्शन ईदर यू सिलेक्ट दिस रेजिस्टेंस और यू हैव टू सिलेक्ट द अपर रेजिस्टेंस. राइट नाउ एज शोन ओवर इन द सर्किट वी विल बी सिलेक्टिंग द लोअर टर्मिनल. तो यहाँ से यहाँ वाला this black to this red we have chosen through this particular red wire. You can look at here, it is connecting like this. So that means when you press this key it will charge, and the charge जैसे ही आप रिलीज करोगे discharge will be via this resistance. ठीक है, ओके. नाउ यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जब मैं प्रेस करता हूँ द DVM वोल्ट मीटर विल बी शोइंग अ 0. ठीक है, क्योंकि वो चार्ज हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो डिस्प्ले 0 कर देगा. जैसे ही की छोड़ोगे यू विल बी शोइंग अ सर्टन वैल्यू, 4 पॉइंट समथिंग दिख रहा है. ओके, एंड दैट वैल्यू विल बी अगेन you have to visualize it. So let's play video and try to understand it. तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मैं प्रेस करूँगा, आई एम प्रेसिंग इट, so this button is showing 0, correct? And then as in when I release, so it shows 4.5, and now it's slowly decreasing, 4.3, then it become a 4.0, then it become a 3.9, 3.8 and so on.
So as the time passes, the stored value of a capacitor is continuously decreasing. Okay, so this is a very interesting way of performing this experiment, and your performance is just in front of you. The best part is that you have a sufficient time to note down the reading. I supposed to tell you, as and when you are releasing the key, you have to start the stopwatch, and for every interval of a 10 second you have to note down this panel reading. That simple. So how was the observation table? Observation table will be start from 10th one, because you can't note it down the 0th second reading. तो 0 सेकेंड को छोड़ के 10, 20, 30, 40 करते आप 20 से 25 रीडिंग नोट डाउन करोगे। कौन से? ये जो डिस्प्ले डिजिटल मीटर की पैनल में जो रीडिंग लिखा है वो रीडिंग यहाँ पे नोट डाउन करोगे। उसके बाद scientific calculator in a higher education study is allowed, so you can go with the scientific calculator and use the ln function or the log e base function and find it out the ln of v। ठीक है, so जब आप फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे, दैट इज अ v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करोगे, v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करोगे, देन यू आर एबल टू फाइंड इट आउट अ टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये v वर्सेस t का माने फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड कॉलम का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको मिल रही है रीडिंग v वर्सेस t की एक्सपोनेंशियल डीके। बहुत बढ़िया कर्व मिलेगा आपको, हर किसी को मिलेगा। वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। देन मैंने आपको बताया था कि टाइम कांस्टेंट वी आर फाइंडिंग आउट बेसिकली है टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट टाउ ढूंढना है, तो टाउ ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल बी रिमेंबरिंग द डेफिनेशन कि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर दैट इज V0, when you start to discharge the capacitor and allow to discharge the capacitor, when your fully charged capacitor become 1 by E time, so V0 divided by E कर दो, उतना जितना वोल्ट रहेगा, that much time is known as the time constant for the capacitor। एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को डीके होते होते उसके इथ पार्ट जितना वैल्यू डिक्रीज होने के लिए जितना टाइम लगेगा, वो टाइम को वो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। आई रिपीट, फाइंड द ईथ पार्ट ऑफ द V0। कैसे करेंगे? ई की वैल्यू को 1 बाई ई कर दो तो आपको मिलेगा 0.37। सो 0.37 से मैंने V0 को मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई गॉट अ V। वो V को मैं y कोऑर्डिनेट पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया, मान लो कि ये 10 है, ठीक है। सो 10 वोल्ट इज डिवाइडेड बाई 0.37, ठीक है, और 0.37 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.7 आएगा। 1 बाई ई को आप चेक करोगे तो उसकी वैल्यू 0.37 आएगी। सो 0.37 मल्टीप्लाई बाई V0 मैंने 10 लिया जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो हो जाएगा 3.7। सो 3.7 वाई कोऑर्डिनेट पे लेना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है। एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज द t। सो अल्टीमेटली आपको ईथ पार्ट ऑफ द V0 का कोरस्पॉन्डिंग टाइम मिल गया, सो दैट इज योर टाइम कांस्टेंट। एम आई क्लियर? वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द डीके कांस्टेंट। सो मैंने पहले बताया था आपको दो ग्राफ आएंगे, एक आएगा, एक ग्राफ है आपका, एक ग्राफ है आपका V वर्सेस T का और दूसरा ग्राफ है आपका ln V वर्सेस T का। सो द लास्ट कॉलम दैट इज ln V वर्सेस द फर्स्ट कॉलम दैट इज टाइम, एंड दिस इज will give you a rate of decay of capacitor, how the capacitor is discharging through the connected R, and that will give you a decay constant, the rate of capacitor at which capacitor is decaying, so that is rate is constant। so आप यहाँ पे देखो नेगेटिव स्लोप की आपको लाइन मिल रही है ln V वर्सेस T की, ठीक है, और this way you are able to find it out the lambda, so the slope value will be the lambda, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, एंड थियोरेटिकली अगर आप ढूंढो तो 1/RC इज इक्वल टू लेमड़ा। सो दैट्स वाई इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी दैट T अपॉन RC लिखा है, सो RC इज रिप्लेस बाय लेमड़ा। सो नेक्स्ट इक्वेशन में आपको पाएंगे 1 माइनस e टू द पावर लेमड़ा बाई
t, actually it should be minus lambda t. ठीक है. So thank you so much for paying attention, and hopefully you will be performing good in the exam. All the best.